facilities are very good. Even the staff here are so cooperative. Kashmir is growing day by day. इससे पहले एक narrative बना हुआ है. If you will see here, the student is coming from different states. When they interact with the students here in Kashmir, they just say that कि यहाँ पर girls का कैसा contribution है, because they are just like कि शायद कश्मीर में girls को इतना preference नहीं दिया जाता. That it has become a kind of an एक वो fabricated बन चुका है एक myth, like कश्मीर में girls को, even अगर आप कश्मीर से बाहर भी जाते, people used to say कि they get surprised whenever they see any girl from Kashmir studying outside the state and all these things. But I think that this is completely different. When we come here, हम देखते हैं कश्मीर में सबसे ज़्यादा opportunities girls को मिलती है. Even you can say, if we will take look at the data, most of the girls from Kashmir, they just study outside the country, outside the state, and all these things are happening here. And जो library में girls का जो मतलब girls पे जो focus है, that's wonderful. Like अच्छा खासा इन्होंने ये सारा कुछ arrange किया है girls के लिए, even boys के लिए भी है, and और बाकी सारी चीज़ें बहुत बेस्ट है. एंड टाइमिंग भी अच्छी खासी है, लाइक फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग फॉर गर्ल्स, एंड वो ये सब चीज़ें बहुत वंडरफुल है इस यूनिवर्सिटी की. वी हैव द फैसिलिटी ऑफ अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, एंड वी हैव एक्सेस टू ऑलमोस्ट 180 e-resource journals throughout the globe, and we have here the different reading facilities. We have 24/7 reading facility in which we have catering support. About 400 students at a time we can have. We have also the browsing facility, internet explosion to the students from different areas, from different subjects diversity, and we have our social inclusion. We give library facility to those students who are not enrolled with the university. It's a great place. I would say that the people here are really mature, and they wouldn't judge you for anything, whatever you want to study, whatever you want to wear, however you want to be. You can be comfortable here. The teachers here, they're all very supportive. The university is great, but I like this library place so much that I often come here and I study here because it's so calm and serene. The campus is really great. You would love it. I would want you to really visit it someday if you have got time. The student who is at this level of age, he doesn't need a third party to make him understand that what he has to do in his life. Obviously, every one of us have figured out. If somebody hasn't figured out yet, that's, I guess, a loss for that person, because we are of mature age and we already know what we have to do. And the girls also here, I think they are also mature enough that they know what path they have to take in their life. ये लाइब्रेरी जो है एक आला मयार की लाइब्रेरी है, क्योंकि जो लाइब्रेरी होती है ये एक जो दानिशगाह होती है, जो भी यूनिवर्सिटी होती है, उसका जो एक मेन सोर्स या हम एक दिल कहेंगे, जिस तरह दिल का काम होता है एक ह्यूमन बॉडी में, इसी तरह जो ये कुतुब खाना है ये एक यूनिवर्सिटी में एक दिल की अहमियत रखता है. और यहाँ पे हम जो देखते हैं कि एक तालिब इल्म के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मैसर है. आप देखिए कि इंटरनेट से लेके जो भी किताब, हर एक मयारी किताब यहाँ पे हमें मिलती है. यहाँ पे जो स्टाफ है ये भी बहुत कोऑपरेटिव है. जो भी बुनियादी सहूलियतें हमें चाहिए वो यहाँ पे मैसर है. आप देखिए कि बैठने की जगह यहाँ पे अच्छी खासी हमारे लिए रखी गई है. मर्ज़ी के मुताबिक हम जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं. और अगर वक्तन फ़वक्तन हमें किसी चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ की जो इंतज़ामिया होती है उनसे हम राब्ता करते हैं, तो बिना मतलब विदिन नो टाइम हमारी जो मांग या हमारी जो ज़रूरत होती है वो पूरी होती है.